it gives you a detailed message, what goes wrong and what was the reason and where it came. Okay, so what happened? Exception came. Which exception? Arithmetic exception. Where it came? It's down there. But before that, in first line, it says before even going to that line, line Java 7, if you notice the message, unchecked exception tester.java, we have an error. If I click, it goes to line 7. Click, that means Eclipse knows that something goes wrong there. But before that, something also invoked this main method. Who invokes that? The thread main. So JVM loads this Java class, which is unchecked exception tester, in the memory. And when it comes to loading the main method, it creates a thread. JVM creates a thread with the name main. That's the default configuration. You cannot change it unless you know how to change the compiler, the Java compiler. And definitely we cannot get the access unless you download some source code of it and put somewhere and then rewrite the whole stuff and then again compile back and give a library. So that's a lengthy process for beginners, but for now, whenever you run your code through the main method, JVM creates a thread with the name main, and that main thread calls this main method, and inside that main method we have a line which throws that error. So what happened? It says exception in thread main. So at the top we have a thread which executes this main method. What's the exception? Arithmetic exception. So java.lang, it gives you the fully qualified name. We call this fully qualified name of a class. That's a technical term. Okay. So it means package name plus Java class. Fine. That makes fully qualified name. So java.lang, that's a package name plus we have Java class name. Okay, great. So now we know this thing, and now what was the reason? What actually goes wrong? This, we were dividing something by 0. So divide by 0 is the reason. That's why this arithmetic exception came. So first it tells us where the exception came, then what exception and what was the reason. That's the first line. In next line, it explains where it actually came. First line just giving you information about a thread, what, why, and where, but in which method it happens. So it says at. Again, it is giving the, excuse me, again giving the package name at. This is again the package name from here till here. This is again a package name, right? Because we were following the steps what we saw in Java language. It says create package with small letters, and if you have extra words or different words, keep them separated by dot. So com dot pack dot exception handling. Then after it has a capital letter. So I'm very sure this is a class name. So that's a class name. Inside that class we have a method main. So we don't need to call that method with reference, guys. That main method is actually a static method. So you just need a name, a class name dot method, and it will be done. Same thing happened here. Class name dot main, done. And inside this main method we have a line inside that class. So what says unchecked? There it is. So main method, then there's a class name dot java, that's a file name, and then line number 7. The last number is actually your line where actually error came. So line 7 is there. If I click, it takes me there. Think about you are inside a file which has thousands of lines. And this is, as I said, this is one of the simplest log you can see. In actual projects, you will see hundreds of 100 lines of exception lines because that's big. We are working with libraries, so you're not sure whether that exception came from your code, the code you're writing, or the library throws that exception. So JVM will give you a long stack trace of your exception. So that's where your experience comes into handy. It comes handy. That okay, then you can figure out easily where the exception is. So that's why I said we should be very good in two things in language, guys. Any language. First, debug your code, and second, log reading. Coding comes later. Okay guys, coding is not a big stuff. After 5 years you will notice coding तो हो जाती है, कोई भी कर लेता है, पर debug करके actually error को figure out करके log check करके error को figure out करना, उसको fix करना, that's one thing, and that's why guys get paid. Code लिखना is not a big stuff. Nowadays in 2023 we have lots of chatbots as well. वहां से code मिल जाएगा, नहीं तो Google तो है अपने पास. कोड लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात होगी जब आप बड़े बड़े लॉग्स पढ़ोगे और वहां से एरर निकालोगे.
क्या एरर है और उसको फिक्स कैसे करना है। और अगर लॉग में समझ नहीं आ रहा तो आपको कोड डीबग करना पड़ेगा, तो डीबगिंग भी सीखेंगे। डीबग तो मस्ट है, जरूरी है, नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे कोड में। बिलीव में कोई और, मैं सीधा कह रहा हूँ, कुछ और लाइन पकड़ लो। अगर डीबगिंग और लॉग नहीं पढ़ सकते तो लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे, कोई भी प्रोजेक्ट में काम ही नहीं कर पाओगे किसी भी। Anyway, so this gives us the line number where the exception came. So this is about thread name. Then this is package name. This is exception class name. This is the exception reason. Exception came at, or say, in this file. So again, this is our package name. This is exception class name again. Not actually, it's just a class name. This is the main method. And then file line which has exception with line number. Okay, done. Done. I hope error, this whole description is clear. So इतना समझ जाओगे तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। This, package name, then the class name, main method, the file which has exception with line number. So we are done with the details. Okay. Okay, done. Now we can see compiler doesn't stop us to execute this code. It was compiled successfully, even though we can read, as we have done this multiple times, so we already know this will throw error, but compiler doesn't know this thing. That's why it is unchecked exception. So I can take this now from here and put it. Done. Next exception is null pointer. Okay, so Bipin suggests string, so let's say string s equals to let's say abc. No sir, only अरे null. रुको तो, अरे रुको यार, वो भी करेंगे। दिस आउट। तो अभी प्रोसेस क्या है, आई वांट टू चेक द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या करना है, s डॉट लेंथ, सिंपल मेथड एंड एग्जीक्यूटिंग द कोड। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 3, करेक्ट, 3 है। नाउ एज यू सेड, लेट्स मेक इट नल। और okay. अब क्या हुआ, कुछ आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम प्रोसेस, somehow or explicitly we just made that as null. So initially it has some value, now we made it null. As soon as do this, you can see the warning is coming out. If I comment this, warning will be gone, right? Check again, that warning is gone from line number 11. If I remove, we have error warning. What it says, null pointer access, the variable can only be null at this location. There's a high chance that whatever your operation you're doing, it might be done with the null operator. So right click, run as application, and we got the same, not same, but different exception this time. So let's open new screen, plus I should take the package name as well. Let's remove this code. So this is the only code we have which is throwing exception, and there we are with exception.
So I don't think I need to again explain this whole stuff, what we got at the bottom. We have an exception where inside main thread, and then what's the exception name? Java lang null pointer exception. Again, this is a class name. Where at pack exception handling, that's a class name, that's a method name, and on which line? Line 11. Let's see, line 11. There it is, line 11. Because we are saying null dot length. So if you do any operation with null, we will always get this null pointer exception. And this is one of the famous and mostly seen exception in our code. But again, as soon as we were writing this code, we didn't get interrupted by the compiler. It says, okay, it's good to go. That will be handled at runtime. So when we execute that code, only then this exception came. So that's second exception, null pointer. Straightforward. So we have to always cross check whether that variable object is null or not. So how we can do this? You can avoid this by using if condition. If s is not equals to null. If it is not equals to null, only then execute the code. Okay. Let's run the code. Yeah, nothing because we don't have else condition. That's the only thing which get printed. So that's how we can restrict it. So we have to be very aware about any variable can throw exception at runtime. Maybe that variable is coming from database or from other file, or maybe from network, or maybe from the file, any folder or file. So at runtime, we never know what can happen. So always take care whenever you're getting some variable from some unknown location where you have a doubt, always put conditions, null checks, always put a null check. If you're not doing that, that means you don't know how to program. Simple. So this was about null pointer exception. And next is index out of bound. So let's do that example. So simple, I have to create an int. Create an array int I equals to some array 1 comma 2 comma 3. Now I want to print the first element. So I 0. That's how it works. And let's say element at index 0 is let me comment this code. As we know this thing, if you are getting any error above, bottom code will not execute. So I've commented null pointer exception, run as application. So we're getting 1. That's correct. What if I make it 10? So at this moment, we don't have that index. We don't have 10th index. We just 0, 1, 2, 3. We have till 3 element and 3 index elements. So if I run this code, array index out of bounds. Okay. So same issue, exception in thread main. We're getting array index out of bounds exception. That is 10. That's the index actually. Where again in same file, same method, but this time line number is 17. If I click on this, it will take me to line 17. So it was not index out of bound, it is array index out of bound. Okay, so this is error, and that's how we can see. Third time we saw that compiler is not doing anything, not interrupting us for, hey, it's 10th index. You don't have that index in your array. It won't restrict it because it might be possible that at runtime you might fail it. So it takes that way that you might fail it. So it's your responsibility to handle this kind of scenarios. Okay, that's the third example, and this is the output. I hope all 3 examples are clear. That's how you can do some more practice, write your own code and logic and see, are you getting that exception or not? And how we can handle that. One example without handling, one example with handling. Let me save this as well. Okay, so this was about unchecked exception, which was not checked by compiler. What about checked exception? So let's quickly create that example. Let me just save checked exception tester. There it is.
Let's clear this whole stuff. So we are with a blank file. Okay, now we're talking about checked exception, which should be checked before you do any operation. So let's try to read some file. I'm not actually reading anything, but read the file. That's my requirement. So what I'll do, I'll give file. There's a class file, or let me use file input stream. Don't worry about it. We will discuss it when we start IO package. But for now, let's keep it this way. New file input stream, and it needs file or path. So let me do one thing. We have this path, right? Here I'll create a new folder. Not folder, a file. Dummy file. Okay. Find some random text. We have some data inside it. Now what I'm trying to do, I want to read this file, dummy file. So that's how we do this. We will take the path, you know. So that's the path. Done and pasted. Don't worry about how it is done and stuffs. But you guys have noticed, as soon as I complete its syntax, I'm getting error. What it says, let's read it out. Unhandled exception type file not found exception. It says you are trying to read some file and there's a high chance or there's a low chance that that file is not present in the file. As a developer, we can say yes, that file is there, but how does system knows that file is there not? Because it's just a one line for now. It's not even executed itself. So what compiler did, it forces us to handle the exception. So this is known as checked exceptions. And compiler says unhandled exception. Which exception? File not found. So how do we do this? We are here to handle these kind of errors as well. Not just this one, but all types actually. So how to handle, we know the best way. Try catch block. Wrap that out and it will be done. So I'll hover the mouse, and Eclipse is suggesting two ways. Either add throws keyword, which we don't know yet, and next is surround with try catch. Okay. I selected try catch block and see that error is gone. What just happened? Now compiler knows, okay, that exception is handled by catch block. What catch has? File not found exception. So inside catch block, we tend to pass exception class name, and that E is actually its reference. And by using that exception reference, we are trying to print the whole stack trace, which is actually a default mechanism, but here we have a more control over it. After printing stack trace or before printing stack trace, we can do some more operation on it. But if you go with the default way, like it was without handling it, so JVM will throw that exception, and that's the default operation. It always gives you the stack trace. So here we are with this structure, and if you run this code, at least there will be no exception because we have not done any operation on it. So as soon as you write some code which might throw exception, that's what happened here. File not found exception. That's the class name. How do we check? Hold control and click on this. There we are. Line 43, public class file not found exception, extend something, that's fine. And if we go at the top, we have a package, java.io, input output, I for input, O for output. So later, but for now, that's how we handle the exception. And that's the best and only way to control the exception flow mechanism. So if you want 100% control on your exception flow, then we should go for try catch. If you just want to pass your exception, then we go for throws keyword, which is used with method signature. Later we'll see that. So that's the one exception which is wrapped here. One is let me show you one more interesting class. Okay, what I'm doing here, I know I'm doing some new stuff for you guys, so don't get confused. Loading the class at runtime by another class. That is
check exception tester. So we are trying to load Apple class at runtime through this checked exception tester class. How do you do this? By using a class. Guys, there is a class in Java whose name is class. Okay. Are you guys aware about this class name? The class whose name is class? Anyone? No? Okay. So that's why we are here to learn. So in Java package, we have a class whose name is class. Where it is present, let's check. So control and click. There it is, public final class and some weird stuffs which I don't know what is that, but definitely it's a class which is marked with final. And if I go at the top, it says package java.lang. There's a special thing about this package. Anyone knows this lang package? Dipin, Manan, say yes or no at least. Yes, sir. Yes means? सर आई थिंक सर मैंने दो चार बार लैन को ओपन किया बट आइडिया नहीं हाँ, किया अबाउट की अच्छा, मतलब ठीक है. Manan, No, sir. no idea. ठीक है. Okay, no problem. Guys, this java.lang package is actually a package. It's a default package which gets whose class doesn't need import line in. I'm writing in a very layman term. It's a default package whose class does not need import line in another class. If we import any class from this package from java.lang, you don't need to write import something, which we have seen in, remember when we were doing specify, I forgot this thing to mention. In element tester, we tried to call water, snow, this stuffs, but every time we were doing import because that was coming from different package. But same, have you guys noticed we were importing lots of classes here? Null point exception, you can see here. We have imported this thing, input stream. It was imported, java.io.file stream. But what about string class? Why we don't see import java.lang.string? Why didn't we saw that java.lang.class? Because classes present inside lang package are default in their nature. That package is by default imported in all classes. You don't have to explicitly mention this. You don't have to write import java.lang.string, java.lang.class. They are there always. So that's the special thing about it. That's a default package which is present in every single class. So you don't have to write that line in any other file. Okay, import. Getting? Now, if you notice line 17, we have a error again. I'm trying to do what? Loading the class. That's how we do this. You don't need to worry about it. That's one way to load a class at runtime. This is a part of reflection API. How do you do this? I mean, what exception says? Unhandled exception. The class, I mean, the exception name is class not found exception. That's the exception name. So what's the fix? Either use throws keyword, which we have not done yet. Other is surround with try catch. So I'll pick definitely this one. And its error is gone. Inside catch block, we have a class not found exception, and E is its reference. So you can repeat the E because it has a local scope. The scope of E, the variable E, is within this here, line 12 to 14. So you can repeat it. But if you are not comfortable with it, because sometimes it happens, you want to make your code more readable. So E does not make any sense. So you can always give some more reference, like not found exception, whatever you want. So that is our responsibility to change the variables. But you have noticed both exception throw some exceptions. And the ideal way is write that code within try catch. So unhandled code needs exception handling.
Checked exception needs exception handling, at least in your code when you're writing, while you're writing code. Otherwise, you won't be able to even compile code. Forget about execution. Okay, so that's the example for checked exception. Any doubt or question, please ask me, because we are done with the topic. Now you guys have to practice about it. सर एक बार इसे अगेन रिपीट कर दो जो आपने क्लास से इसको तो क्लास डॉट फॉर नेम व्हाट इज फॉर नेम सर उसको समझना ही क्यों है, जरूरत ही नहीं समझने की। आपने लिखा है तो मुझे लगा समझना है। वो एक तरीका है, वो एक एक्सेप्शन है। मुझे याद नहीं है कौन सा और चेक एक्सेप्शन, तो उस टाइम तो मुझे वो याद आ गया, वो लिख दिया मैंने। वो एक तरीका है, देखो चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। क्लास इज जस्ट अ क्लास whose name is class, है ना। तो लिखा भी क्या है, class dot class in where it is present java dot lang, there it is, okay fine। Inside that class there's a method whose responsibility, or you can say whose work is to load class other classes. So class dot for name, for name is a static method. How do I know? Because I have not instantiated anything, right? I was just calling for name directly with the class name, so I'm very sure this is a static method. Even I can see it is italic in nature. In Eclipse, static method shown as italic, and if I click on it, there you can see public static and something, and then there's the method name for name. What it takes, string class name. Even you can read the document. I don't know what it says. There it is. See, the fully qualified name of the desired class which you want to load at runtime. Fully qualified name, see, I said this is not my term. It is actually a technical term which is used by the developers who wrote this whole Java language. Fully qualified. That means a class with package name. That's what I did. If you guys have noticed, I have written that the same way. Com pack basics.apple. So whatever I'm teaching you guys, that's actually from the point of view where you actually do some coding as a developer, as an experienced developer. So you should know these terminologies. And here I've already explained it. Fully qualified means class with package plus class name. That's what fully qualified means. Okay, fourth name is also done. Okay, Vin, so for name is a static method which takes the fully qualified name and it will load that class at runtime when you actually run that code. And when this happens, so there will be lots of information which you can fetch from there. So as some time progress and you guys more get into this code, then I'll let you know some more information about it. But for now, this is more than enough. Idea is to learn when it comes to checked exception. So that happens at when you're writing a code. So you have to handle them right away. Unchecked, that means it takes some time. So best way is wrap that code within try catch initially. You don't never write any code like this way. If you see someone who is writing this kind of this way without any try catch, that means that person is quite lazy or he is quite dumb to understand what is try catch blocks. So this is exception handling, types of exceptions in exception handling. Next is, if you guys are okay, I can proceed with next keyword, fourth keyword, that is throws. Oops. Throws keyword. Okay. So throws keyword is to, usually people say it is used to handle exception, but that's not correct information about it. But we can say it is used to redirect or duck the exception. Duck means saving itself. It's not that duck from the water or the lake. Okay. So when you write this throws keyword, that means you don't want to handle that exception. You just want to pass it to someone else. Redirect or duck or pass the exception to the caller. Whoever calling this method will handle that exception. That's what throws do. And even before that, it is used with Manan, what is method signature? What does it mean? Manan, in there?
So at least stats. I think method signature are whose keyword are used for creating method. Hmm. I think public static void main Hello. method signature method. Yes, that's right. Hello. Yes, Manan, you're audible. What happened? Sir, method signature, I think it is the full name with its parameter list. Correct. So I am writing a syntax which says access specifier, then return type, then method name, then some argument types, right? 1, comma 2, and goes on. Then we write throw keyword right here. I hope you guys are aware about it. Throws. And after throws, we need to write exception class name, right? What you're throwing, you are throwing some exception. So that's how it goes. So that was the syntax. Example is public void do something. That's a method name. Maybe it's taking some argument. So let's say int x, and then it says throws and some exception name. So there I can, or let's say I'll change the method name. It will make more sense. Read some file, and this is string file path. Throws file not found exception. What do you say, guys? I hope you guys are getting this method working. Fine. So we have a method signature, and where we use it, it's also clear. What's the purpose? To redirect or tag the exception or pass the exception to the caller. That's it. So let's do this again. I'm going back to Eclipse. Let's learn this keyword usage. So I'm going to copy that checked exception class again. Checked exception done. I'll say throws tester. Throws tester. Okay, there we are, throws tester, and let's remove this stone. So I'm not going to create any method. We already have a main method, so we can use it. So let's get rid of this stuffs. Or actually, let's do one thing. Let's do some stuff actually. Um, read. Let's do the same way like I did. Read some file, and it takes string file name, file path, not name, file path. Okay, so we can clearly see this method is actually reading some file. Now we need to call that method. So I'll make it static, so we don't need to create object. Okay, so we can directly say read some file, and it needs path. So I'll take this out from here, cut it, give it here, and then I'll pass that file path here. Fine, and no issue. Code looks good. Let's remove the try catch blocks. Okay, now we have error, right? So read some file, giving the path, pass calling that method, read some file, path goes here, and we got the error. So what I'll do, watch it carefully, guys. I'll hover the mouse. It says unhandled exception. We already saw that. Now we have two options. Surround with try catch. We have done this already. Let's try add throws declaration. See what happens when I pick this. So Picked, file saved, and error is gone from this method. But now main method throwing the error. What it says? Same message. Unhandled exception. File not found. So have you guys noticed what I wrote? It's matching up. I clearly said that it is used to redirect or duck or pass the exception to the caller. Who was calling this method? Main method.
So read some file, do what? What it did, it actually redirect the exception to the caller. It says, if something goes wrong here on line 14, I won't handle that exception. As soon as the exception comes up, it goes to the caller. That's what I mentioned here. It is used to redirect or duck or pass the exception to the caller. So in our case, who's the caller? Main method. So now it's caller responsibility, either duck that exception again or handle it gracefully. So if I hover, same message, I'll say, okay, let me handle it. So this is the proper way of handling exception. So that's what we do actually in project sometimes. Sometimes that method won't handle exception. It will be handled by the caller. So we just wrote throws and it's done. Again, have a look on this code and tell me, does it make any sense or not? There's nothing to print, so I'm just leaving it as it is. Any question, any doubt, any other thing which you want to practice here on this example? Let me know so we can fix it right away. Hello. Yes. Sir, why there is a need of throws keyword when we have a try catch block? लिखा तो यहाँ पर. It is used to throw. Sometimes we don't want to handle the exception. There are lots of scenarios where we want to make our code more simpler. We don't want to add some more blocks inside it. So we can do what? We can add this keyword. So what I'll do, I will write some library. I'm giving a real-time example. Let's say I am working some example, maybe one service. That service will perform some PDF operation, PDF file reading. And by the time my code is working fine, I'll give some method to other guys. Okay, see, this is my library. This library will read the PDF and give you all text in your text file, TXT file, from PDF to text. So in my library, you might find some methods. You can use them, but in case if you pass something wrong, maybe the file name, maybe the PDF file or the file path you're giving, it's wrong. So it's not my responsibility to handle the exception. Think about, you are using my library for converting that file into a PDF and then getting back the text file. So it's your responsibility to give me the correct path. If you won't give me the correct path, how would I read that file and convert that into PDF or something else? So in that case, I'll say, okay, if you give the wrong file path, so I'll throw that exception. It says file not found. How can I even handle that exception? My library is just for converting, not for handling that exception, which has a wrong path. So that's the caller responsibility to take main method as a one developer and read some file as a B method, B developer. B developer just did some operation, and it's not responsible to handle the wrong or right path. It's the caller responsibility. So a developer should write that code to cross check whether that file is that file is present in that directory or not. After confirming that, yeah, that file is present in that directory, only then call this method. Manan, what do you say? Getting the actual requirement? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर. हिंदी सर में ये बोल देता काम हूँ. तो हम लोग, ये हाँ, वाला काम तो हम वैसे भी कर सकते हैं ना ट्राई कैच ब्लॉक से. नहीं, उसमें तो हम खुद से कर तो स्पेशली थ्रोस कीवर्ड की जरूरत यहाँ पे क्यों पड़ रही है? फिर समझ नहीं पा रही मेरी बात को. मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी लिखी है पीडीएफ में, ऐसे समझो. कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसे समझो, मेरे पास एक बॉक्स है, ये रहा बॉक्स. ये बॉक्स नहीं, एक्चुअली ये सर्विसेज है. यहाँ पे डेव टीम ए बैठी हुई है, यहाँ पे डेव दो टीम्स बैठी हुई हैं. ये क्या करते हैं, ये यूटिलिटी मेथड्स बनाते हैं, क्रिएट्स यूटिलिटी मेथड. इसमें से एक मेथड है पीडीएफ जनरेशन का. ठीक है, ध्यान से सुनना. डेव भी करती है सिर्फ यूटिलिटी पे काम. ये छोटे छोटे ऑपरेशंस करने के लिए आपको मैसेज देती हैं. ठीक है, तो एक मेथड हमारे पास है जो पीडीएफ को जनरेट करता है. तो नाउ dev says, okay, we need one converter which converts our text to pdf. Okay, ठीक है. तो dev भी क्या कहता है, dev भी says how this pdf generation will work. It says give me txt file and I will convert it into हाँ, pdf. Simple. Give me text file and I'll give you
दिस कन्वर्टेड पीडीएफ फाइल। सिंपल। सो अगर टेक्स्ट फाइल देनी है तो आपको पाथ देना पड़ेगा। तो डेव ने क्या कहा, ठीक है पाथ सही है, हम आपको पाथ देते हैं। इन्होंने क्या करा, सारा कोड लिखा, ये करा, इन्होंने बोला ठीक है हम आपको पाथ दे रहे हैं यहाँ से। सो ये गया यहाँ से एक स्ट्रिंग के फॉर्म में पाथ, और इन्होंने क्या करा, गलती से EKG का D कर दिया और यहाँ पे फाइल का नाम से डाल दिया, जो भी यहाँ पर डमी फाइल है। अब ये पाथ दे दिया, इनके पास सेम डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं, ये तो एक्सेसिबल है, यहाँ पर ही डमी फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे डमी फाइल टेक्स्ट पड़ी हुई है। ओके, ये एक फोल्डर है दैट वी आर अवेयर। सो डेव के पास भी एक्सेस है, इसके पास भी एक्सेस है, एंड इवन वी कैन सी दिस थिंग। द एक्चुअल पाथ फॉर दिस इज ई ड्राइव, राइट। एक्चुअल पाथ इसका ये है, ई ड्राइव है इसका। अब पाथ है इसने ये, तो गलती किसकी हुई, डेवलपर ए की। अब कोड क्या करा, कोड इसके अंदर गया, इन्होंने लिख रखा है इस वे में मेथड। अभी ये थ्रोज हटा देते हैं, इन्होंने लिखा है ऐसे करके। इनका काम है कि रीड सम फाइल, और मैं इसको थोड़ा फिक्स कर देता हूँ, और जनरेट PDF फाइल, दैट्स हाउ टिपिकली लुक्स लाइक। ओके, अब अगर मैं इसको ऐसे हटा दूं, इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ ले देते हैं। ठीक है, तो अब इसका काम क्या है, ये एक फाइल का पाथ लेगा, रीड करेगा उस फाइल को और कन्वर्ट कर देगा PDF में। सिंपल इनफ। अब डेवलपर इन्हें क्या कर रखा है, उसने तो सैंडी फाइल का जो पाथ है वो गलत सेंड कर दिया। तो ये बताओ ये जनरेट PDF फाइल इसको हैंडल क्यों करेगा। ये तो इसका काम है ना कि जब वो पाथ दे रहा है इसको क्रॉस चेक करे, वो चेक करे। बहुत सारे मेथड्स होते हैं IO पैकेज में कि जब भी एक पाथ बने तो क्रॉस चेक करो कि वो फाइल है कि नहीं। हमारा मेथड क्या कह रहा है, वो बोल रहा है जनरेट PDF फाइल, ये थोड़ी कह रहा है कि डिटेक्ट द रॉन्ग पाथ। जब भी हम किसी को लाइब्रेरी देते हैं तो हम वहां उसको बताते हैं कि हमारा काम इतना है, अगर कुछ गलत होगा तो हम एक्सेप्शन शो कर देंगे। यहाँ अगर मैं ट्राई कैच लिख दूंगा तो मैं तो एक्सेप्शन हैंडल करते रह जाऊंगा फिर, कि गलत पाथ दिया है। इसका काम है सिर्फ ये चेक करना। अभी मैं बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ अदर वेज कि गुड प्रोग्रामिंग, बैड प्रोग्रामिंग, द बेस्ट प्रोग्रामिंग और एलिगेंट प्रोग्रामिंग। बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं जब आप एंटर करोगे इस फील्ड में, तो बहुत सारे टर्म्स सुनोगे अपने सीनियर से। तो वहां पे अगर आपका मेथड कह रहा है जनरेट PDF फाइल, तो वाई यू हैव टू चेक कि मतलब आपको वो पाथ हैंडल ही क्यों करना है। आपका कोड तो वहीं कहीं ब्रेक हो जाना चाहिए। समझो, हम ट्रैक कैच कहाँ यूज करते हैं कि हमारा कोड ब्रेक ना हो, कोड ब्रेक ना हो और बाकी की फंक्शनली चल जाए। तो इस केस में आपको बाकी का कोड चलाना क्यों है। मनन अनम्यूट करिए, बताइए। ट्रैक कैच हम क्यों लिखते हैं कि ट्रैक कैच उस पर्टिकुलर सिनेरियो को हैंडल कर लेगा और नीचे का कोड चला देगा, हमारा नॉर्मल जो फ्लो है वो अफेक्ट ना हो। यहाँ पे तो काम है इसका PDF जनरेट करने का, आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो जनरेट PDF फाइल नीचे क्या प्रोसेस करेगा। तो वाई यू नीड टू हैंडल दैट एक्सेप्शन विद ट्राई कैच। सीधा उसको रिटर्न कर दो वहीं से, वहीं कि जैसे देखिए बात गलत है, इसने रीड करा, उसको फाइल मिलेगी ही नहीं, तो यहीं से थ्रो हो जाएगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये जाएगा डेव ए के पास और वो हैंडल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ये डेव ए का काम है, सॉरी डेव बी का काम है, जिसने कुछ यूटिलिटी मेथड लिखा है, ये है डेव ए, इसने हैंडल करना है, तो इसने हैंडल कर लिया, तो ठीक है मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। इन केस अगर ये फाइल नहीं मिलती है तो ये इस कैच ब्लॉक में जाएगा जिसका काम ही है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। पर अगर वो समझदार डेवलपर होता तो ये पाथ निकालने के बाद पहले वो चेक करता कि इस लोकेशन पे वो डमी फाइल है भी या नहीं, तब मैं इसको कॉल करता। यहाँ पे चेक लगाता, इफ दैट पाथ कंटेन्स दैट फाइल और नॉट, देन कॉल रीड सम फाइल, अदरवाइज रिटर्न द सेम। रिटर्न एक्सेप्शन तक जाना ही नहीं है, वहीं से रिटर्न कर दो कि वो फाइल है ही नहीं इस लोकेशन पर अगर रीड या जनरेट की बात हो रही है तो हमारा कोड तो वहीं ब्रेक होगी कि फाइल ही नहीं है, तो बाकी का कोड आपको चलाना क्यों है। मनन बोलिए, आया ओके समझ सर, में। गॉट इट। मतलब सर एक तरीके से देखा जाए तो डेवलपर है और डेवलपर भी दोनों की दोनों अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशन ले सकते हैं, मतलब। बिल्कुल। ये तो मुझे आपको
थ्रोस कीवर्ड समझना था इसलिए मैंने एक्सप्लेन ले लिया। हालांकि ये काम दोनों करते हैं। डेव वी भी अगर ट्राई कैच लिख सकता है, वो कैच ब्लॉक्स में रिटर्न करा देगा, उसका काम वो करेगा, वो थ्रो कीवर्ड से। अभी हमने थ्रो तो सीखा ही नहीं है, इसलिए मैं सिनेरियो पे आया नहीं हूँ। मैं इस सिनेरियो को आगे यूज करूंगा जब हम थ्रो कीवर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थ्रोस पढ़ रहे हैं। हमने बोल दिया कि जो डेव वी है वो सिर्फ थ्रोज ही यूज कर सकता है। उसके पास उसको हैंडल ही नहीं करना। उसने बोल दिया भाई मेरे पास तो टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे पाथ भी चेक करूं, मेरा काम है तुम सही पाथ दो, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, गलत पाथ दोगे तो खुद हैंडल करो, मैं तो वहीं से थ्रो कर दूंगा। मैं ट्रैकर्स लगा के और चीजें रिटर्न नहीं करने वाला। और लिटरली ऐसा ही होता है। थिंक अबाउट, अभी जावा में कोई ऐसी क्लास नहीं है जो पीडीएफ डायरेक्ट कर सके। तो आप क्या करोगे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करोगे। बहुत सारी अपाचे की लाइब्रेरीज आती हैं, आई टेक्स्ट आता है, पीडीएफ के पीओआई लाइब्रेरी होती है अपाचे की, मोस्टली यूज होती है जनरेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, भाई तू ट्राई कैसे लगा, वो क्यों लगाएगा, हम तो उसकी सर्विस यूज कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी बैठा हुआ है, वो तो अपनी सर्विस दे रहा है, वो भी फ्री में दे रहा है। उसने बोल दिया मेरे पास ये फीचर है, इसको अपने प्रोजेक्ट में डाल लो, इस लाइब्रेरी को, और यूज कर लो। अब वो ट्राई कैच लगाए ये बताने की तुमने बात गलत दी है, वो नहीं करेगा। वन सिनेरियो। तो ओके सर। ठीक है, चलो। आई होप समझ में आ गया। विपिन समझ में आ गया आपको भी? यस सर। ठीक है। अरे इतने लो एनर्जी क्यों बोल रहे हो? नो सर। थकान हो गई? एनर्जी लो नो क्यों लग रही है? अच्छा नो ठीक सर। है। तो ये दिस इज थ्रोस कीवर्ड। थ्रोस कैसे काम करता है, मेथड सिग्नेचर के साथ। इसका काम ये है कि जहां कोड ब्रेक हो वहीं के वहीं इसको रिटर्न कर देगा, किसको, कॉलर को। नाउ इट्स द कॉलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल दिस। इसका यूज ये बनाया गया है कि चीजें और फर्दर ना एग्जीक्यूट हो और रिटर्न कर दे वापस कॉलर के पास। इसलिए इसको कहता है कि रीडायरेक्ट समझ लो, या फिर टक समझ लो तो टक समझ लो, या फिर पास द एक्सेप्शन। ये तो काफी सिंपल वर्ड है, पास द एक्सेप्शन टू द कॉलर। तो अपने केस में मेन मेथड है, जिसने कॉल किया था उसने पाथ गलत दिया तो एक्सेप्शन आएगी, सही दिया तो नहीं आएगी। तो ये कोड इनकम्प्लीट है डेफिनेटली, अभी तक हमने इसमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा, समझ नहीं आ रहा होगा। पर अभी हमें सिर्फ एक्सेप्शन के नाम पे फोकस करना है, फंक्शनलिटी पे जाना नहीं है। अभी चक्कर क्या है कि हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, और वहां पे तो ये क्लास तो यूज करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन है नहीं कि मैं फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हवा में दिखा दूं। तो मुझे थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं वहां भी अपने आप को रोक रहा हूँ कि कम से कम कोड लिखे। आप उस कोड में मत जाओ, उस कॉन्सेप्ट को समझो। कोड लिखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, जब तक आप आईटी में हो, आपको कोड ही लिखना है। चाहे आप डेवलपर हो जूनियर लेवल पे या सीनियर लेवल पे या टीएल पे, इवन आप मैनेजर लेवल पहुंच जाओ, मैनेजर भी कई बार कोड लिखते हैं, लिखते हैं तो कम से कम रीड आउट करते ही हैं। तो कोड आपका पीछे नहीं छोड़ जब तक आप आईटी लाइन में हो। तो कॉन्सेप्ट समझो, कोड तो दिखता रहेगा हमेशा जिंदगी में, कोड देखना सबसे कोड आएंगे आप लोगों को। तो कॉन्सेप्ट समझो कि हमने थ्रोस कीवर्ड यूज किया है, ताकि ये मेथड का काम इतना रहे कि एक्सेप्ट फाइल आया, उसका पाथ आया, उसको कन्वर्ट किया, खत्म, रीड कर लिया, खत्म। और चीज इसको फंक्शनलिटी इसको नहीं देनी, और वो काम करेगा कॉलर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अभी आपके पास एक ही टॉपिक बच रहा है। आज के सॉरी, दो टॉपिक बच रहे हैं, दो टॉपिक इन सेंस कि एक तो कीवर्ड बच रहा है थ्रो। थ्रो को वापस हम सीनरी में यूज करेंगे, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे रिक्वायरमेंट को, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट थी सिर्फ जनरेट करना है, मे बी कल और रिक्वायरमेंट आ जाए। तो एक थ्रो कीवर्ड बच रहा है और दूसरा बच रहा है कस्टम एक्सेप्शन। हाउ टू क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन क्लास। अभी तक जो हमने देखा इस लास्ट इमेज में, ये सारी की सारी जावा फाइल्स हैं, ऑल दीज आर जावा क्लासेस। रन टाइम एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, इंटरप्ट एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, स्ट्रिंग आउट ऑफ इंडेक्स, नंबर फॉर्मेट, ऑल दीज आर जावा क्लासेस गाइस। ऑल दीज बॉक्सेस, येलो, ब्लू, पर्पल, whatever color you can see, all these are java boxes except my boxes. So क्या आप खुद की क्लास बना सकते हो, कस्टम क्लासेस, कस्टम एक्सेप्शन क्लासेस? सो यस, इट्स राइट। और वी कॉल दिस यूजर डिफाइंड क्लासेस और कस्टम क्लासेस। तो वो हम सीखेंगे, या फिर आप लोग करिए इसको, ज्यादा बेटर रहेगा। टाइम बचेगा तो हम नेक्स्ट पिक कर लेंगे। अगर ये आप लोग कर लेते हैं, देखिए बहुत सिंपल तरीके हैं इसको क्रिएट करने के। आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट, मे बी आयु वीक इन आयु पैकेज के स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। आयु स्टार्ट करेंगे, इसके बाद एक्सेप्शन के बाद आयु पैकेज। थ्रेड्स नहीं स्टार्ट करेंगे, थ्रेड्स बहुत ही इलॉजिकल रहेगा इस पूरे सिनेरियो में। हम थोड़ा सा जब यहाँ पे टाइम बचेगा, सो आयु एक्सेप्शन हम करेंगे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट, और 2 से 3 दिन में इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, इसलिए नहीं है तो बता देना, मैं क्लास को स्लो कर लूंगा मैं। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको सारा कुछ समझ में आया है क्लास 10 तक, मतलब हमारी 10 क्लासेस हो चुकी हैं। तो इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसमें मैं डिस्कस करूँ आपको समझना है। एक्सेप्शन सॉरी एग्जाम्पल देना ना देना, दैट्स डिफरेंट थिंग। मुझे उस टॉपिक को इंग्लिश में रिप्लाई करवाना, दैट्स डिफरेंट थिंग। पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि टॉपिक समझ में आया और कैसे काम करता है, हिंदी में बता दो, तो समझ आया कि हाँ ठीक है, 10 दिन हमारे काम आए हैं, वेस्ट नहीं हुए हैं। तो अगर आपको 10 दिन समझ में आ गया, तो 11वें दिन में आयु पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा तेज होगा वो, ताकि ये
टाइम फ्रेम हम कवर कर सकें, वरना हम सिर्फ कोर जावा पढ़ते रह जाएंगे, फ्रेमवर्क्स कब सीखेंगे। तो आईओ पैकेज और फिर कलेक्शन, और उसके बीच में जेडीबीसी पे भी सीखेंगे हम लोग। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, बोलिए। सर कल क्लास कंपनी आना, ऑफिस आना है सर? हाँ, मैं अभी अभिषेक से बात सर करता हूँ। बिकॉज बताइए। मनन भी कम चांस है कल आए। अच्छा अच्छा अच्छा, मनन नहीं आएंगे। हाँ तो और सिर्फ मैं ही आऊँगा अगर आना हो तो। अच्छा सोचा अच्छा, हूँ ठीक तब है। ऑनलाइन ही ले लिया जाए। ठीक है विपिन, मैं चलो ठीक है अभिषेक से बात करता हूँ, क्या ये लोग रिप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। सर कल क्लास होगी? क्लास नहीं, क्लास तो 5 दिन ही चल रही है हमारी। 6 बजे तो आप लोग मुझे बताओगे क्या सीखा आप लोगों ने। तो सैटरडे डिस्कशन का डे है, उसमें जितने भी आपने एग्जांपल्स करे होंगे या नहीं करे होंगे, नहीं करे होंगे तो एग्जांपल रीजन दे देना क्यों नहीं करा। तो 6 डे डिस्कशन वाला डे है, जहाँ पे आप लोग अपने क्वेरीज लेके आओगे, उस ओके जितने सर। भी टॉपिक्स कवर्ड हैं। ठीक है, क्लास नहीं होगी, पर डिस्कशन कर देंगे। इनकेस अगर नहीं ज्वाइन करते तो ऐसे ही घंटे कलेक्ट कर लेंगे, और आप लोग अपने स्क्रीन शेयर करोगे तो बताओगे क्या क्या कर ले, क्या नहीं करा, और क्या डाउट है। और बाकी जो मुझे दिखेंगी कुछ गलतियां या कुछ छोटी मोटी चीजें, वो मैं अपडेट कर दूंगा आप लोग। इतना ही होगा, सर पढ़ाना नहीं होगा। बोलिए। सर डिस्कशन क्लास सर परसों रख सकते हैं? कल कहाँ, कल अवेलेबल नहीं हो आप? नहीं सर। अच्छा, चलो ठीक है, बता दिया। मैं ये भी पॉइंट बता दूंगा कि देखो ये है। मैं बात करते हैं लोगों से, क्या रिप्लाई आता है, फिर उसी अकॉर्डिंग अब मतलब अभिषेक से बात करके आपको अपडेट करता हूँ ग्रुप में। हाँ विपिन, कुछ कहना चाह रहे थे? नो सर। डाउट हो गया संडे को, संडे एंजॉय करना है।